All right, let's jump right in. Today we're going to talk about something that's so fundamental to our world, we barely even notice it, the quest for precise measurement. It's this epic story about how we created order out of chaos, and it's truly the bedrock of all modern science and technology. So think about this for a second. You've got this special platinum bar locked away in a vault in Paris. You've got a wire so thin you can barely see it, and you've got the steady, rhythmic swing of a pendulum. What on earth do they all have in common? Well, believe it or not, they are all key players in the incredible story of how we learn to measure our world. But before we get to all the cool, high-tech tools, let's just take a step back and think about what things were like before. Just imagine trying to build anything, or even just trade goods, in a world where a foot was, well, it was literally the length of the king's actual foot. Inconsistent, unreliable, chaotic. That's the perfect way to describe it, right? If my foot is bigger than your foot, how are we ever going to build a house that doesn't fall over? How do we agree on how much fabric you're buying? It was a total mess. Clearly, something had to change. And this quote right here, it just nails the solution. See, at the end of the day, measuring something is really just comparing it to something else. The huge problem was that everyone was comparing to different things. To fix the chaos, we all had to agree on one standard thing to compare against. We needed to invent the unit. So, that's exactly what humanity did. This huge push for a universal agreement gave birth to something like a universal alphabet for the physical world. You've probably heard of it, the International System of Units, or as we all know it, SI. At the very heart of this system are what we call fundamental units, and that alphabet analogy is perfect. These are like the A, B, and C of measurement. They're the 7 absolute core building blocks, and the key thing is they stand completely on their own, independent of anything else. And here they are, the superstars. The meter for length, the kilogram for mass, the second for time, and so on. You see all 7 of them right here. And what's so wild is that every single thing we can physically measure can be boiled down to some combination of just these 7 fundamental ideas. So if those are our letters, what happens when you start putting them together? Well, you start making words, right? And that's exactly what derived units are. They are the words and sentences we build by combining the fundamental units to talk about more complicated stuff. Just look at how this all connects. You see those basic units down at the bottom? The kilogram, the meter, the second? They start branching out. You combine meters and seconds and boom, you get the unit for velocity. You mix a few others and you can describe force or density. It's this whole rich language for describing the universe, and it all comes from just 7 simple letters. Okay, so we've got our universal language. That's a huge step, but there's a catch. It's one thing to agree on what a meter is. It's a completely different challenge to use that idea to measure something super tiny, like the thickness of a hair. And that brings us to the next chapter, the art of precision. I mean, think about it. Your standard ruler is great. It's got millimeters on it. But what happens when you need to measure something smaller than a millimeter? Like how thick is a single sheet of paper or the diameter of a tiny wire? A ruler's just not going to cut it. You need a more sophisticated tool. And that's where this awesome tool comes in. Meet the vernier calipers. This thing is so clever. It's got this little sliding scale on it that lets you measure tiny fractions of a millimeter, way more accurately than you could ever hope to with a regular old ruler. So, what's its secret? It all comes down to a concept called least count. You can just think of it as the instrument's superpower. It's the tiniest little measurement it can actually see and report accurately. For your ruler, that's 1 millimeter. But for the vernier calipers, we can get down to 1/10 of a millimeter. That is a massive upgrade in precision. So how do you actually use this thing? Well, it's a really clever 3-step trick. First, you get your main reading from the big scale. But then, and this is the cool part, you look for the one single line on that little sliding scale that lines up perfectly with a line on the main scale. That little alignment tells you the exact fraction. You do a quick bit of math, and bam, you've got a super precise measurement. Now, of course, in the real world, no tool is absolutely perfect. Sometimes the 2 zero marks don't line up exactly when it's closed. That's called a zero error. But scientists know this happens, so they have a fix. If the error makes the reading look too big, they just subtract a little bit at the end. If it makes it look too small, they add it back. It's all about knowing your tools and correcting for their little quirks. But what if even 1/10 of a millimeter isn't good enough? Well, then you bring out the big guns, the screw gauge. By using the mechanics of a really fine screw, this instrument can get you down to 1/100th of a millimeter.
Now we're talking about measuring the thickness of a human hair. Absolutely incredible. Okay, so we've talked about measuring tiny things in space. But let's switch gears. How in the world do you measure something you can't even see or hold, like time? Well, for that, humanity turned to rhythm. And that brings us to the simple pendulum. You know, for centuries, this was pretty much the best timekeeper we had. It's so simple, right? Just a weight swinging back and forth on a string. But the genius is in its consistency. That steady, repeating motion, it's like a natural metronome. And that steady, predictable beat has a name. It's called the time period. That's just the exact amount of time it takes for one full swing, all the way over and all the way back to where it started. And what's amazing is that for any given pendulum, that time period stays almost perfectly the same, swing after swing, making it a reliable natural clock. So, what makes it tick? What controls that heartbeat? Well, it really boils down to just two things: how long the string is and the pull of gravity. That's it. And what's maybe even more fascinating is what doesn't matter. You'd think a heavier weight would swing faster, right? Nope. Or that a wider swing would take longer? Also not true, as long as the swings are small. And that's what makes it so beautifully reliable. And it all comes down to this simple, beautiful relationship. The time period is proportional to the square root of the pendulum's length. So get this, if you want the swing to take twice as long, you can't just double the length. You have to make it 4 times as long. It was figuring out this exact mathematical rule that let us turn a simple swinging weight into the first truly accurate clocks. So, let's pull all these threads together. We've gone from a world of total chaos to creating a universal alphabet for measurement. We invented incredible tools to see into the microscopic world, and we even harnessed a simple rhythm to get a handle on time itself. And why is all of this so important? What's the big takeaway? It's this. Every single piece of technology you rely on, every scientific breakthrough, every building, every microchip, none of it would be possible without this relentless quest for precise and reliable measurement. It is, quite literally, the language we use to build our world. And here's the thing. It never stops. We're always pushing the boundaries, trying to measure things that are impossibly small or impossibly large or happen incredibly fast. This whole quest for precision is a journey without a finish line. Which kind of leaves you wondering, right? What's the next great frontier? What's the next impossible thing we'll need to learn how to measure? Thanks for watching. चलिए आज बात करते हैं मापन यानी मेजरमेंट की। ये वो बुनियाद है जिस पर विज्ञान की पूरी इमारत खड़ी है। अच्छा, एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर हम सब 1 मीटर की लंबाई या 1 किलोग्राम के वजन पर सहमत ही ना हो पाएं, तो क्या होगा? विज्ञान, व्यापार, इंजीनियरिंग सब कुछ ठप पड़ जाएगा, है ना? तो इस समस्या का हल एक बहुत ही सिंपल आइडिया से शुरू होता है। सबसे पहले हमें ये तय करना होता है कि हम माप क्या रहे हैं। इसे कहते हैं भौतिक राशि, जो हमेशा एक नंबर और उसके मात्रक यानी यूनिट से मिलकर बनती है। तो ठीक है, हर माप में एक यूनिट तो होती है, पर अगला सवाल ये उठता है कि हम सब एक ही यूनिट पर सहमत कैसे हों? बस यहीं से एक यूनिवर्सल भाषा यानी एक स्टैंडर्ड सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। देखिए, पुराने जमाने में यूनिट्स बहुत भरोसेमंद नहीं थीं। जरा कल्पना कीजिए, हर नए राजा के आने पर फुट की लंबाई बदल जाती थी। इससे व्यापार और कंस्ट्रक्शन में कितना ज्यादा कंफ्यूजन होता होगा। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट में 3 बातें होना बहुत जरूरी हैं। पहली, उसकी परिभाषा बिल्कुल सटीक हो। दूसरी, वो हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हो। और सबसे जरूरी, वो वक्त के साथ कभी बदले नहीं। और बस इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वैज्ञानिकों ने मिलकर एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया। और मज़े की बात यह है कि ये पूरा सिस्टम सिर्फ 7 बेसिक यूनिट्स पर टिका है। इन्हें हम एक तरह से फिजिक्स की वर्णमाला कह सकते हैं। इन्हें ही हम मूल या आधार मात्रक कहते हैं। ये आइडिया अपने आप में कितना पावरफुल है। सोचिए, ये ब्रह्मांड को समझने के लिए हमारी ABCD हैं, जिनसे हम बाकी सब कुछ बनाते हैं। और ये रहे वो 7 आधार मात्रक। देखिए, इसमें लंबाई के लिए मीटर, वजन के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड जैसे जाने पहचाने यूनिट्स तो हैं ही, साथ में तापमान के लिए केल्विन और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल भी हैं। बस यही 7 हमारी नींव है। तो अगर ये 7 यूनिट्स हमारी वर्णमाला हैं, तो फिर हम इनसे शब्द कैसे बनाते हैं? चलिए देखते हैं कि कैसे इन बेसिक यूनिट्स से मिलकर कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को मापा जा सकता है।
तरीका बहुत ही सरल है। आधार मात्रकों को गुणा या भाग करके हम बनाते हैं व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट। यहाँ हमारी वर्णमाला वाली बात और भी साफ हो जाती है। मूल मात्रक अक्षरों की तरह हैं, एकदम बेसिक और आज़ाद। और व्युत्पन्न मात्रक उन अक्षरों से बने शब्दों की तरह हैं, जैसे स्पीड यानी मीटर प्रति सेकंड या एरिया यानी वर्ग मीटर। ये तस्वीर इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है। ध्यान से देखिए कैसे बेस यूनिट्स जैसे किलोग्राम, मीटर और सेकंड्स से मिलकर बल यानी फोर्स या ऊर्जा यानी एनर्जी जैसी कॉम्प्लेक्स यूनिट्स बन रही हैं। ये एक पूरा सिस्टम है जो सिर्फ 7 पिलर्स पर खड़ा है। एक आसान सा उदाहरण लेते हैं, जैसे स्पीड। इसकी यूनिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम स्पीड के फॉर्मूले यानी दूरी बटा समय में दूरी और समय की बेसिक यूनिट्स डाल देते हैं और हमें मिल जाती है इसकी यूनिट मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास भाषा तो आ गई, लेकिन हम ऐसे माप कैसे करें जो बिल्कुल सटीक, एकदम प्रिसाइज हों? इसका जवाब हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट में मिलता है। ये वो सबसे छोटा मान है जिसे कोई उपकरण भरोसे के साथ माप सकता है। हमारा साधारण रूलर आमतौर पर 1 मिलीमीटर तक माप सकता है, लेकिन अगर हमें उससे भी छोटा कुछ मापना हो तो बस यहीं पर वर्नियर कैलिपर्स जैसे खास उपकरण काम आते हैं, जो हमें कहीं ज्यादा सटीकता देते हैं। इसकी खासियत इसका ये अनोखा स्लाइडिंग स्केल है। इसकी मदद से हम मेन स्केल के 2 निशानों के बीच की खाली जगह को भी पढ़ सकते हैं। मतलब हम मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक माप सकते हैं, जिससे हमारी सटीकता 10 गुना बढ़ जाती है। और जब हमें इससे भी ज्यादा सटीकता चाहिए हो, मान लीजिए किसी पतले तार का व्यास मापना है, तब हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। ये भी वर्नियर के सिद्धांत पर ही काम करता है, लेकिन ये हमें मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक की सटीकता दे सकता है। कमाल है ना? असल में देखा जाए तो ये उपकरण हमारी इंद्रियों का ही विस्तार हैं। ये हमें उन चीज़ों को देखने और मापने की ताकत देते हैं जो हमारी आंखें नहीं देख सकतीं, और इस तरह ये हमारे लिए हकीकत के नए दरवाजे खोलते हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है और ये सब किस दिशा में जा रहा है? देखिए, हमारी परिभाषाएं लगातार बेहतर हो रही हैं। मीटर अब पेरिस में रखी कोई प्लैटिनम इरिडियम की छड़ नहीं है। अब इसे ब्रह्मांड के एक फंडामेंटल कांस्टेंट यानी प्रकाश की गति के आधार पर परिभाषित किया गया है। किसी भौतिक वस्तु से हटकर प्रकृति के एक ऐसे नियम पर आधारित होना जो कभी नहीं बदलता, ये बदलाव हमारी मापन की भाषा को पहले से कहीं ज्यादा भरोसेमंद और यूनिवर्सल बना देता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। हम जो मापते हैं वही हमारी दुनिया को परिभाषित करता है। तो जैसे जैसे हमारी मापने की क्षमता बेहतर होती जाएगी, ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ भी तो बदलती जाएगी, है ना?